Okay, we can also define a quantity here, uh, which is uh, which is sigma x over a, and this quantity. So we can also write as sigma x over a, and this sigma x over a. If you see this, that is uh, sigma x is in fact uh, some number of particles per unit time. So this would represent some probability. Yeah. So sorry, number of particles per unit area. So sigma x upon a would represent a probability as well. So we would say that also this this combination, that is constant combination where we are talking about sigma x and a combining together, represents probability. Yeah. And this can only make sense if we take A to be area of overlap of the incident beam with the target. Yeah. So this can only make sense uh, if and only if we take A as, so we take A to be the area of overlap of incident beam with the target. ये वही वाली चीज जो पीछे हमने बात की about mapping. Okay, so from this we can say that uh, what is Ix? Ix is some sort of a counting rate of an event. So what is Ix? Ix is the counting counting rate of some event for an event X, or some outcome X. Yeah, so it means that what is Ix? Ix is some sort of a counting rate for an event X or the outcome X. Yeah. So if this is the case, then J can be written as, then J no, then in that case J could be written as NP over A times NT. Yeah. Which is the effective luminosity. Effective luminosity. Yeah. That is, if target particles are distributed, let's say, over a certain volume with the number density, that is the number of particles per unit volume n, then the possible number of targets can be that can be scattered would be क्या हो जाएंगे अगर हम now, because we need to identify what is the meaning of this NT. So NT को define करने के लिए अगर हम ये सोचें कि number of target particles, that is the particles which are scattered from the target, if they are distributed over a certain volume, then that distribution over a certain volume would represent some density, and that then the number density or the number of particles per unit volume, उसको अगर हम n कहें, small n कहें, let's say small n कहें या कोई भी number दे दें, then the possible number of targets that would be scattered from the scattering center, वो nt वो बराबर हो जाएगा किसके, n, that is the number of because we are talking about number of targets, so that would be just a number. So nt would be some density times area time thickness, ताकि सारे आपके पास जो dimensions हैं वो correct हो जाएं. So nt कैसे निकाला जाएगा? So target if target particles are distributed over a certain area, over a certain volume, sorry, certain over a volume
over certain volume, let's say capital V, with number density, that is the number of particles per unit volume, number density per unit volume. वॉल्यूम, अगर नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम लेट से उसका हम नाम दे दें स्मॉल n, देन द पार्टिकल्स, then the possible number of particles rather, then the uh, possible number of target particles, targets we can scatter, वो कितने हो जाएंगे, we can scatter from is n t which is equals to n is the number density per unit volume। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, नंबर अपॉन वॉल्यूम टाइम्स एरिया, एरिया की डायमेंशन स्क्वायर होगी, टाइम थिकनेस। सो आपके पास क्या चीज़ आ गया, थिकनेस से मुराद ये कि जो टारगेट मटेरियल उसकी थिकनेस कितनी है। सो वेयर टी is the target thickness, is the target thickness। Yeah. So then let us define some initial quantities J naught, which is equals to NP over A, or incident projectile flux हो जाएगा। So this is nothing but incident projectile flux। Yeah. Therefore Ix किसके बराबर हो जाएगा, Ix would be equals to NP over A, ये क्वांटिटी, सिग्मा एक्स इंटू एन टी, सब्सटीट्यूट कर दें इसकी जगह। सो आई एक्स वुड बी इक्वल्स टू जे नॉट, ये अभी हमने डिफाइन किया है, सिग्मा एक्स अपनी जगह और यहाँ पर आपका एन टी, और वी कैन कैलकुलेट सिग्मा एक्स विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर, आई एक्स डिवाइडेड बाय J naught into NT, and we could also write it as Ix, और J naught की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें NP ओवर A, और आप NT की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, सो दिस क्वांटिटी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल्स टू Ix ओवर NP into NT। yeah, this is sigma x। yeah, so let's say if event ix really is some particle जिसको आपने डिटेक्ट किया in some range, let's say some solid angle range which is d omega, then this equation जो ये अभी आपने लिखी है sigma x is giving you a differential scattering cross section। कैसे, so if event ix is really a particle which is being detected in some range of angles of angle d omega, yeah, then the differential scattering cross section वो क्या हो जाएगा, that would be d sigma over d omega, which is equals to di over d omega divided by j naught
times n t. Yeah, or we could write it as d sigma over d omega, which is equals to di over d omega divided by j naught n a t. This is known as the differential scattering cross section. So इसका क्या मतलब है? That is d omega into di over d omega. ये वाला न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड पर राइट साइड पर जा सकता है ना. देन ये क्वांटिटी क्या बन गई? इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattered into some solid angle d omega. So this is d omega. Yeah. So यहाँ पर दो फंक्शंस हमें नजर आ रहे हैं. एक फंक्शन हमें नजर आ रहा है क्या? दो फंक्शंस हैं, टू फंक्शंस. कौन कौन से जरा गौर से देखें. एक है डी आई ओवर डी ओमेगा है, और एंड द अदर फंक्शन वो क्या है? अदर फंक्शन इज डी सिग्मा over d omega. या सो द फंक्शन डी आई अपॉन डी ओमेगा, इसको हम कह रहे हैं ये हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं. और जो फंक्शन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा है, ये हम थियोरेटिकली क्वांटम थ्योरी से निकाल सकते हैं. एंड सो यहाँ पर आप देखें इंटरेस्टिंग बात कि द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन विच इज डी आई अपॉन डी ओमेगा, it is related to the theoretical understanding of the scattering theory from quantum physics, which is d sigma upon d omega. So one can say the function di over d omega can be thought of as being an experimental measure. यानी किसी एक्सपेरिमेंट में, जैसे लार्ज हैड्रन कोलाइडर में, एक्सपेरिमेंटल measure which is related to which is related to the theoretical understanding of scattering theory from quantum physics, from quantum mechanics. ठीक है ना. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने आखिर में यह हासिल किया है कि हम ये जो पैरामीटर्स हमने अटैच किए, एक पैरामीटर हमने, अगर आप शुरू से देखें तो एक पैरामीटर आपने इंसिडेंट बीम के हवाले से कहा जिसको जे नाम दिया. एक पैरामीटर आपने आउटपुट बीम के हवाले से बात की जिसको डीएन कहा, या फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनपी कहा, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स. और फिर उसी फार्मूले को आपने एक और तरह से लिखा, यानी आई एक्स की सूरत में. और जब आई एक्स, तो एक्स जो लेबल आपने आई के नीचे लगाया है, दैट इज बेसिकली लेबलिंग अ स्पेसिफिक इवेंट. सो any specific event can happen, and how in on what numbers, on what factors it would depend upon the number of incident particles per unit area, the probability that the particle would be scattered sigma x, and also the number of target particles. And अगर इन सब values को combine करें तो we have this equation जो ix के लिए आती है,
और इस इक्वेशन को अगर सिंपली ऑन बोथ साइड्स डी ओमेगा से डिवाइड कर दिया जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड पर दैट वुड बी डी आई अपॉन डी ओमेगा, और राइट हैंड साइड पर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। एंड डी आई अपॉन डी ओमेगा एंड डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा दो वो क्वांटिटीज हैं जो वन ऑफ देम इज दैट इज डी आई अपॉन डी ओमेगा इज रिलेटेड टू some experiment and is an experimental measure, and d sigma upon d omega is some quantity which is related to theory. That is it is basically determined theoretically using theoretical understanding in quantum mechanics, such as हम टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके। सो अब हमारा जो, क्योंकि इस कोर्स के अंदर वी आर नॉट डूइंग एक्सपेरिमेंट, सो इस कोर्स के अंदर अब हम क्या करेंगे, हम अब डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा निकालेंगे। और डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा मुख्तलिफ तरीके से, आपने डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा पार्शियल वेव एनालिसिस और बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से निकाला हुआ है। यहाँ पर हम वो भी थोड़ा सा दोहराएंगे, और उसके बाद फिर हम मोर एडवांस स्कैटरिंग टॉपिक्स जिसके अंदर टू वेव फंक्शंस का डिफरेंस निकाला जाएगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्कैटरिंग प्रोसेस। ओके, सो उसको यहीं तक रखते हैं आज।